Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we'll start the estimating the sum. Okay, we'll continue how we will estimate. Okay, so this is example number 2. First, read the question. Find the actual and the estimated difference of 8,32,910 and 5,90,100 by rounding off to the nearest lakh. Now children, in your previous class also you have studied this. Okay, so what will you do? You will estimate it. So just write down the number. The number is 8,32,910. So you will see the second number. And in second number you have to see whether it is between 1 to 4 or 5 to 9. So if the number is between 1 to 4, what will you do? The number will remain as it is and the rest number will turn into 0. See, look here, 8 and then the remaining 5 digits are turned into 0. Okay children? Then the next estimation. How will you estimate the next number? The number is 5,90,100. Okay. So again you will see the second digit. The second digit is 9. It is between the range of 5 to 9. What you will do? You will add 1 to the first number. So you will add 1 to the first number. So 5 will become 6 and the remaining numbers will become 0. You can look here. Then what will you do? You will subtract it. Okay. So now children, see, 8 lakhs minus 6 lakhs will give you 2 lakhs and here 8,32,910. You will subtract. Which number you will subtract? You will subtract 5,90,100. Then you will get the answer children. Look here. This is how you will estimate and you will solve your question. Now children, we will solve example number 3. Rishabh spent 63,70,915 on buying a flat and then he bought a car of rupees 5,49,810. Estimate the total cost he paid and compare it with the actual cost. Now children, what will you do here? See here, this is 63 lakhs. तो हम क्या करेंगे? हम इसे estimate कर 60 lakhs नहीं कर देंगे because that's a huge amount. Okay, 3 lakhs जो है वो huge amount है, इसीलिए हम इसको round off करेंगे. Okay, you'll see the third digit. Okay, so look here children, because that's a huge amount. So here you'll see the next digit here, 7. 7 is greater than 5. So हम हमेशा क्या करते हैं? We look at the 6th and the 5th digit. But here 7th digit आ गया है. Yes or no? See, this is the 7th digit. So you cannot estimate it 60 lakhs because 3 lakhs is a huge amount. तो हम क्या करेंगे? We will see here the third digit और इसको इसके हिसाब से estimate कर देंगे. Now we will estimate it 64 lakhs. Okay. Now children, what you have to do? You have to estimate it. And you will estimate here also. Okay. Now you have estimated this cost and then you have estimated the car cost, which has become 5 lakhs. Okay. This is 5 lakhs. Then you have estimated the total cost, that is 69 lakhs. Then the actual cost, you will add them and you will get it. Okay. Again, see children, what you have to do here, you have to estimate the cost. Okay. तो ऋषभ ने क्या किया है? एक फ्लैट खरीदा है 63,70,915 का. Yes children, and he has also bought
a car of 5,49,810. Here 5,49,000 को आप उसी तरह एस्टिमेट करेंगे. The second digit less than 5, ये इट इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे. Yes. Yes. Then earlier also I've told you how this has become 64 lakhs, because this is a huge amount. We will see the third digit also. Okay. So ये हो गया, and then you will add it. तो आपको क्या मिला है, 69. Okay. Your answer will be 69. And the actual cost you will straight up add. Okay. You will add this amount, you will add this amount and this amount, and you will get this. And then you will compare. This is 69 lakhs and this is 69 lakh 20,725. These are almost equal. क्यों? क्योंकि दोनों 69 के रेंज में. Okay children. Now children, now we will solve example number 4. Renuka earns 15,09,500 in a year and spends 12,85,000. Okay. Estimate her annual savings. Okay. So she earns this much. रेणुका जो है वो कितना अर्न करती है, इतना अर्न करती है, और वो स्पेंड कितना करती है, इतना अमाउंट. आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू एस्टिमेट कि वो कितना सेव करती है. तो आपको क्या करना है, उनके टोटल सेविंग्स में से वो जितना स्पेंड करती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपको क्या मिल जाएगा, हर एक्चुअल सेविंग. ओके. एंड आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है. यहाँ पे आपको उसकी एक्चुअल सेविंग्स जो है उसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ एस्टिमेट करना है. Now look here children, how much does she earns here? This is the answer. आप थर्ड डिजिट देखेंगे, it is 0, that means it will remain as it is. तो सारा 15 lakhs हो गया. Then her savings, third digit is 8, you will add 1. Okay, ये 7 digits के हैं, तो आप थर्ड डिजिट देखेंगे और यहाँ पर आप add 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13 lakhs. तो 15 lakhs minus 13 lakhs will give you 2 lakhs. तो ये उनका एस्टिमेट एनुअल सेविंग्स. ओके चिल्ड्रन, अगेन सी हाउ विल यू सॉल्व दिस. सी, रेणुका अर्न्स 15,09,500 in an year and she spends 12,85,000. ओके. तो वो कितना स्पेंड कर देती हैं, एंड शी एस्टिमेट्स हर एनुअल सेविंग. तो एनुअल इनकम ये हो गई और एनुअल एक्सपेंडिचर ये हो गया है. ओके. तो हमने क्या किया, थर्ड डिजिट को देखा, थर्ड इज 0, दैट मीन्स नो चेंज. 15 विल रिमेन एज इट इज एंड द रेस्ट नंबर विल बिकम 0, जैसे हमने यहाँ पे किया था. थर्ड डिजिट 7 ग्रेटर देन 5, तो 3 को हमने +1 कर दिया, 4 हो गया एंड इट बिकेम 64 lakhs. तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे. यहाँ पर इट इज़ 0 लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, नंबर एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे द थर्ड डिजिट इज 8, so you will add 1, 12 को, तो it will become 13. 2 plus 1 is 3, so 1 3 and many 5 times 0. So you will now subtract 13 lakhs from 15 lakhs and you will get 2 lakhs. This is her annual saving. Okay children. So रेणुका कितना सेव करती है, 2 lakhs per year. Okay children. Now, children, we will solve exercise
2.5. Okay, this is exercise 2.5. Let me write it again. This is exercise 2.5 and this is page number 24. Okay, this is page number 24. Okay, so the first question, find the actual and the estimated sum by rounding off to the nearest 10,000. That means you have to round it off to the nearest 10,000. So what will you do children? आपको नियरेस्ट 10,000 में इसे राउंड ऑफ करना है. तो नियरेस्ट राउंड ऑफ में आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपने जो अमाउंट है आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज 3,29,512 and 1,12,087. Okay, these are the two amounts that has been given to you. Now आप उसको ऐड कर दोगे. 2 + 7 9, nothing to carry. 1 + 8 9, 5 + 0 5, 9 + 2 will give you 11. 1 you written here, 1 you have carried here. So 2 + 1 3, 3 + 1 4 and 3 + 1 again 4. So ये आपका आंसर आ गया 4,41,599. आपको इसे एस्टिमेट करना है. फिर यहाँ पे 6 डिजिट है तो आप क्या करोगे? 6 डिजिट में सेकेंड डिजिट देखोगे. तो सेकेंड डिजिट आप यहाँ देखोगे 2 है which is less than 5. So automatically now children see it is less than 5. तो सारे नंबर्स as it is 0 हो जाएंगे and 3 will remain 3. तो हमने 0 सारा कर लिया. Then the another number, see here, this is 1. Again less than 5. So the number will remain as it is and the remaining numbers will become 0. So automatically this becomes 1 lakh. So here you have to add 3 lakhs plus 1 lakh and this will give you 4 lakhs. See the sum, there is not much difference. They are almost equal. The actual amount is 4,41,599 and the estimated amount is 4 lakh. Okay. So this is question number 1A. Okay, ये कौन सा question है? This is 1A of exercise 2.5 page number 24. Okay. Look here children. This one is the actual and this is estimate. Okay. So you can pause here the video and you can solve the sum. Now children, we will solve question number 1B of exercise 2.5. Okay. So this is question number 1B. Okay. Again आपको यहाँ पे एस्टिमेट करना है और एक्चुअल अमाउंट ढूंढना है. एक्चुअल अमाउंट आपको पहले ही दिया हुआ है, that is 5,22,714 and the next amount is 2,83,929 और इसको आपको ऐड करके you will get the answer. Okay. तो इसको तुरंत ही आप ऐड कर दीजिए. You will get 8,06,643. 4 + 9 will give you 3. 13. You will write 3 and you will carry 1. Okay. So 1 + 1 2, 2 + 2 4. You will write here 4, nothing to carry, it is single digit. Then again 7 + 9 will give you 16. You will write 6 and you will carry 1. Then again 3, 1 + 2 3, 3 + 3 will give you 6. Then again 2 + 8 will give you 10 and you will carry 1 and आपको मिल जाएगा आंसर 8. Okay? This is your actual sum. Then how will you estimate? Again second digit. See the second digit here, it is greater than, it is smaller than 5. Okay, it is not greater than 5. तो आप क्या करोगे? नंबर as it is रहेगा.
So 5 and the remaining numbers will turn into 0. तो ये आपका estimate हो जाएगा. Then again 2,83,929. 8 है तो it is greater than 5, so you will add 1. Okay, 2 को आप add कर दोगे, then it will become 3 and it will become 3 lakhs. Okay, so what will you do, children? 5 lakhs and this 2,83,929. The second digit is 5, so automatically you will add 1, so it will become 3 and the remaining numbers will become 0. So 5 plus 3 will give you 8 and the remaining numbers 0. Okay, so 5 plus 3 will give you 8 and the answer is 8 lakhs. So see, the actual answer is 8 lakhs 6,643 and the estimated answer is 8 lakhs. Okay, children? So here you can pause the video and you can write it down. This is question number 1B of exercise 2.5. Now children, now we will solve the next question, that is exercise 2.5 question number 2a. Now look at the question. The question is find the actual and the estimated sum by rounding off to the nearest lakh. यानी आपको nearest lakh में round off करना है. Okay, so here look here children, your question is 2,80,125. Then you have the next number is 1,28,509. Okay, तो ये जो है आपके दो numbers हो गए. Yes children? Yes. Now what will you do? You will first total of the actual number जो आपको number दिया हो. So 5 plus 9 will give you 14. So you will write your 4 and you will carry 1. Okay. So 1 plus 2 will give you 3 and 3 plus 0 will give you 3. Nothing to carry. Then 1 plus 5 will give you 6. Then 0 plus 8 is nothing but 8. 8 plus 2 will give you 0. So again you will write 0 and you will carry 1. So 1 plus 2 will give you 3. 3 plus 1 will give you 4. So the answer is 4,08,634. Okay. तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका actual answer. Okay, this is the actual sum. Now you have to find the estimate sum. Now how will you find estimate sum, children? You will round it off. Okay, तो हम कैसे round off करेंगे? सबसे पहला हम ये number देखेंगे. The number is 2,80,125. Okay, so अब second digit देखेंगे, वो है 8. और आपको पता ही है 1 to 4 द नंबर विल रिमेन एज इट इज़ अगर सेकेंड डिजिट है तो. और अगर जो नंबर है इट इज़ बिटवीन 5 to 9 और ग्रेटर देन 5 तो वो क्या होगा? आप यहाँ पे ऐड 1 करेंगे नंबर को. यस और नो? नाउ लुक हियर, दिस इज 8. सो 8 इज ग्रेटर देन 5 और ये 5 to 9 के ब्रैकेट में भी है. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट डिजिट को यू विल ऐड 1. सो जो 2 है 2 को आप क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे. So 2 plus 1 is 3. तो हमने 3 लिख दिया. Rest every number will become 0. Look here, everything will become 0. तो आपका क्या amount हो गया? This has become 3 lakhs. Yes or no children? Yes. Now children look at the next number. हम इसे भी estimate करेंगे. हम क्या करेंगे? हम estimate करेंगे. So look at the next number. The number is 1,28,509. The number is 1,28,509. Okay. Now look here children. You will again look here the second digit. The second digit is 2 less than 5. Yes.
तो जब आपको पता है 1 to 4 के बीच में अगर कोई नंबर है तो जो फर्स्ट नंबर विल रिमेन एज इट इज एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बिकम 0. तो 1 एज इट इज रहेगा. Yes or no children? Yes. And then बाकी सारे नंबर जो 2 है वो फिर 0 हो जाएगा, 8 है वो भी 0 हो जाएगा, 5 है वो भी 0 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, 9 0 हो जाएगा. तो आपको अमाउंट मिलेगा 1 लाख एंड देन यू विल एड इट. सो 0 + 0 0, 0 + 0 0, again 0, again 0, again 0, 3 + 1 will give you 4. So you will get answer 4 lakhs. So here look here, this is 4 lakhs 8,634 and here you will get exactly 4 lakhs. तो ये आपका क्या है? This is your estimated sum and this is your actual sum. Okay, तो आप देख रहे हैं it is almost equal. Okay children, so now you have to find the estimated sum. In exercise 2.5 question number 1 and 2. Now children, now we will solve question number 3 of exercise 2.5. Now children, let us solve question number 3. Now find the actual and the estimated difference by rounding off to the nearest lakh. In earlier question you had to find the estimated sum. That means you have to total it. Okay, आपको प्लस करना था. यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा गया. डिफरेंस में you will subtract. Okay, now see here children, look here. Here is the question, 5,27,319 and 2,85,103. ओके, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9 - 3 will give you 6. 1 - 0 will give you 1. 3 - 1 will give you 2. And 7 - 5 आपको 2 मिल जाएगा. Now 2 is a smaller number whereas 8 is a ग्रेटर नंबर. तो आप जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे 8 को 2 से. तो आप क्या करेंगे? आप बोरो करेंगे. तो आप बोरो करेंगे दी नेक्स्ट नंबर से. नाउ वी कैन बोरो फ्रॉम 5. यस, व्हाई? बिकॉज 5 इज अ ग्रेटर नंबर. तो ये हो गया 12. 12 - 8 विल गिव यू 4 एंड 4 - 2 विल गिव यू 2. सो हियर इज योर आंसर 2,42,216. ओके, ये आ गया आपका आंसर. दिस इज योर एक्चुअल आंसर. ये क्या है? द एक्चुअल डिफरेंस. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द एस्टिमेट डिफरेंस. ओके, एस्टिमेटेड डिफरेंस. नाउ चिल्ड्रन, अगेन यू विल लुक एट द सेकेंड डिजिट. इट इज 2 विच इज लेस देन 5. तो जो नंबर 5 होगा वो जो पहला नंबर होगा वो एज इट इज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. रेस्ट एवरी नंबर विल बिकम 0 एज यू कैन सी. तो ये क्या हो गया आपका? जब आप राउंड ऑफ करोगे, एस्टिमेट करोगे, तब 5,27,319 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 5 lakhs. देन यू विल गो टू द नेक्स्ट सम. नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन इज 2,85,103. Now again you will see the second digit. Look here children, this is the second digit, that is 8 which is greater than 5. आपको पता भी है ये 5 to 9 की ब्रैकेट में आता है. तो क्या होगा? हम फर्स्ट नंबर को क्या कर देंगे? +1 कर देंगे. जो फर्स्ट नंबर क्या है? द फर्स्ट नंबर इज 2. ओके, सो 2 + 1 विल गिव यू 3 एंड रेस्ट नंबर विल बिकम अगेन 0. यू कैन सी सारे नंबर्स क्या हो गए हैं? 0 हो गए. अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. ओके, जैसे ही आप एस्टिमेट कर दोगे फिर आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. एवरीथिंग 0 - 0 will give you 0. Again see, there are 0, again 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0. Then you will subtract 3 from 5. So 3 - 5 will give you 2. So आपको आंसर मिल गया 2 lakh. See, this is the actual difference, 2,42,216. और ये आ गया आपका estimated difference which is 2 lakhs
Yes, children. So you can see these are almost equal. Okay. Now children, now we will solve the next question. Okay, question number 3b. This is 3a. Write down children. This you have to write down in your notebook. Okay children. Now this is question number 3b. Okay, 3b में आपको क्या नंबर दिया हुआ है? Look here children. The number is 2,19,567. Okay, this is your number, and then this is the first number, and then आपको 87,309 दिया हुआ. What will you do children? You will subtract this number from this number. Okay, now we will subtract the number. This is the actual difference. Okay, difference means you have to subtract it. Okay, now can you subtract 9 from 7? No. Why? Because 7 is a smaller number and 9 is a greater number. So what will you do children? You will borrow from the other number. तो हम borrow करेंगे next numbers, उसके previous numbers. तो हमने borrow कर लिया 6 से, because 6 is a greater number. 6 is greater than 0. So we have borrowed here. 17 minus 9 will give you 8. Then 5 minus 0 will give you 5. 5 minus 3 will give you 2. 9 minus 7 will give you 2. 11 minus 8 will give you 3. But यहाँ 11 करने से पहले the number was 1. 1 minus 8, can you do that? No. Why? Because 1 is a smaller number whereas 8 is greater. Okay, so 1 is smaller than 8 and 8 is greater than 1. तो आप क्या करेंगे? आप borrow करेंगे. So इससे पहले वाले number से हमने borrow कर लिया. Okay, from 2 we have borrowed 1, so it has become 11. 11 minus 8 will give you 3. और ये जो 1 है as it is हम 1 ले आएंगे. So आपका आंसर मिल गया 1,32,252. Yes children, you have got this. Now you will round it off. Okay, हम क्या करेंगे? हम estimate करने के लिए round off करेंगे. So again you will look at the second digit. It is 1. आपको पता ही है बच्चों 1 to 4 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसके प्रीवियस नंबर को कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा. तो 2 है तो इट विल रिमेन एज इट इज़. सो 2 एंड द रेस्ट नंबर विल बिकम 0. यस, 7 विल बिकम 0, 6 विल बिकम 0, 5 also 0, 9 also 0 and 1 also 0. Then the next number is 87,000. See, 87,309. Okay, then 7 is greater than 5. Yes, 5 to 9 के बीच में जो भी होगा हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 1 to the first number. So 8 will become 9. Okay, so ये क्या बन गया? 90,000. So you have to subtract 90,000 from 2 lakhs. Okay, yes. Now look here children, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 90,000 को 2 लाख से तो आपको क्या मिलेगा? सी 0 minus 0 will give you 0, 0 minus 0 again 0, 0 minus 0 again 0, 0 minus 0 again 0, then 2 and 0 minus 9. Can you subtract 9 from 0? No. Why? Because 9 is a greater number whereas 0 is a smaller number. तो आप क्या करेंगे? आप 2 से borrow करेंगे. ये 1 हो गया, ये 10 हो गया. 10 minus 9 will give you 1 and 1 will come as it is. तो आपका आंसर हो गया 1,10,000. अगेन आप इसको राउंड ऑफ करेंगे. यस, तो सी दी सेकेंड डिजिट, इट इज़ 1. तो जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज रहेगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बिकम 0. सो दिस विल बिकम 1 लाख. ओके चिल्ड्रन, सो आपका आंसर होगा 1 लाख. वाई? बिकॉज हम 1,10,000 को भी राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट में लाएंगे. ओके,
So write down this. Now children, we will stop here for today. I hope you have understood how to estimate. Then next we will solve word problems. Okay children? Yes. So have a great day and take care of yourself. Thank you children. Have a nice day children.